इस लेक्चर वीडियो में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे फार्मूले को कवर करेंगे। फर्स्ट फार्मूला इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F इक्वल टू mv²/r। m is the mass of electron, v is the velocity of electron, r is the radius of the orbit. Centripetal force equal to Ze²/r². Charge on electron equal to -1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Mass of electron equal to 19.109 into 10⁻⁻28 gram. किलोग्राम में 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। A proton is 1836 times heavier than an electron. Mass of proton equal to mass of neutron. Neutrons 0.18% heavier than proton. Number of alpha particle scattered deflected equal to 1 upon kinetic energy of alpha particle square. That is equal to the atomic number of targeted nuclei square. Thickness of target. Density of nucleus equal to mass of the nucleus upon volume of the nucleus. Mass number upon Avogadro number upon 4/3 pi r cube. Energy of quantum, that is photon, E equal to h nu, which is equal to h c lambda. H equal to c.626 into 10⁻⁻34 joule second. That will be 6.6 into 10⁻⁻27 arg second. H is a Planck constant. V is the velocity. V is the frequency of an electron. Frequency equal to c upon lambda. Angular momentum of electron mvr equal to nh upon 2 pi. Radius of an orbit rn equal to h² upon 4 pi square me² n² upon z. H is a Planck constant. M is the mass of electron. E is the charge of electron. N is the number of cell. Z is the atomic number. इसको जब हम एक कांस्टेंट वैल्यू है सब सॉल्व करेंगे तो 0.529 आता है। 0.529 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू द बोहर रेडियस। वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन v इक्वल टू 2 पाई Ze² अपॉन nh, विच इज इक्वल टू द 2 पाई E² अपॉन h Zn। इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आती है 2.18 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर सेकेंड। n इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1, देन वेलोसिटी इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻8 सेकेंड पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। Here z is the atomic number, E is the charge on electron, n is the number of cell, h is the Planck constant. Energy of an orbit En equal to -2 pi me² upon h² z² upon n²। इस कांस्टेंट वैल्यू को सॉल्व करेंगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू आएगी। 1 upon lambda इक्वल टू न्यू बार विच इज इक्वल टू 2 pi square z² me4 upon hq/c 1 upon n1² minus 1 upon n2²। r z² n2² minus n1² upon n1² n2²। r इक्वल टू 1.096 इंटू 10⁻5। जो r की वैल्यू है ये z को हटा के बाकी सब की वैल्यू r होती है। r इज अ रीडबर्ग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 1.096 इंटू 10⁻5। If
n equal to n2 equal to 2 and n1. Then Rydberg constant becomes nu bar equal to 1 by lambda equal to 3 by 4 r. When electron jump from higher energy level n to ground state, number of spectral line produced are number of photon. N equal to n minus 1 upon 2. N is the high energy level cell. N is the high energy level cell. When electron jump from high energy n2 to lower energy n1, then total number of spectral line produced, total number of photon produced equal to n2 minus n1 plus 1 upon 2. de Broglie wave equation. Lambda equal to h upon mc. C is the velocity of light, m is the mass of particle, lambda is the wavelength, h is a Planck constant. Replacing c by v, lambda equal to h upon mv, that is mv equal to momentum, that is lambda equal to h upon p. Delta x into delta p is greater than or equal to h upon 4 pi. This is a Heisenberg uncertainty principle. This is a Heisenberg uncertainty principle. यहाँ पे डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और डेल्टा पी इज द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम. दिस इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. लैम्डा स्क्वायर साई अपान डेल स्क्वायर साई अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपान डेल वाई. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. डेल स्क्वायर साई अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपान डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपान डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपान एच स्क्वायर ए माइनस वी साई इक्वल टू 0. Here psi is the wave function of an electron wave, represented amplitude of an electron wave. X, Y, Z is the Cartesian coordinate. M is the mass of electron, is the Planck constant, E is the energy, total energy of electron, V is the potential energy of an electron. Where del square del square upon del x square plus del square upon del y square plus del square upon del z square is a Laplacian operator, that is delta square del square. Maximum number of electron in any cell equal to 2n square. Maximum number of orbital in any cell equal to n square. Number of electron in any subcell equal to 2l plus 1. Number of electron in any subcell equal to 2l plus 1. Number of orbital in any cell 2l plus 1. Orbital angular momentum mu equal to under root l plus 1 h upon 2 pi, h equal to h upon 2 pi. देन इसकी जगह पे हम h ही रख सकते हैं. मे इक्वल टू अंडर रूट l प्लस 1 इंटू h. ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम मे इक्वल टू अंडर रूट l प्लस 1 bm. 1 bm इक्वल टू eh upon 4 pi mc, which is equal to 9.2 into 10 power minus 4 joule. Spin angular momentum of electron mu s equal to under root s plus 1 h upon 2 pi, where s is the sum of spin quantum number. Spin magnetic momentum of an atom mu s equal to under root 4s s plus 1 bm, which is equal to under root n plus 2 bm, which is equal to under root 4s s plus 1
into EH upon 4 pi mc, where n is the number of unpaired electron. Total angular momentum mu equal to G under root J plus 1 Bm, where G equal to 2, then J equal to L plus S. Angular velocity of an electron equal to 8 pi square Z square me4 upon NqHq, where Z is the atomic number, m is the mass of electron, E is the charge on electron, n is the number of cell, h is the Planck constant. बस ये कवर हो गया पूरा, इतना ही फार्मूला है एटॉमिक स्ट्रक्चर में. थैंक यू फॉर वाचिंग.